बच्चों वेलकम टू बोलो फिजिक्स क्लासेस। बोलो फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है। टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट? देखो बेटा, सपोज कंसिडर टू चार्जेस, वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज अ नेगेटिव चार्ज. When they are separated at certain distance, the electric lines of passes from positive charge direction to negative charge direction like this, right? So the positive charge has a potential is what is the potential of positive charge? V plus 0 beta. Negative charge has a potential is V minus. The capacitance of these two charges can be written as C is equal to Q upon V plus minus V minus or Q upon delta V. This is our capacitance of these two charges. Suppose consider two plates which having the charges plus Q and minus Q. When they are separated at certain distance d like this, right? Where area is the dielectric medium here better. The capacitance of the capacitor C is equal to A epsilon naught upon D हो जाता है बेटा. Okay. Suppose consider a capacitor of capacitance C in which between a dielectric constant K and thickness T is introduced between these two plates. So the capacitance of the capacitor would be C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T upon K, where K is called as, what is the K? Dielectric constant of this medium. Okay. If T is equal to 0, C is equal to K epsilon naught, A epsilon naught में क्या हो जाता है बेटा? If T is equal to 0, C is equal to K epsilon naught by D हो जाता है बेटा. That means the capacitance of the capacitor will increase to K times of its initial value. Okay. Next, the capacitance of a spherical capacitor. Suppose consider a spherical capacitor which having a different radii, that is called inner radius is A and outer radius is B. Some amount of the charge is given on the inner surface, then what happening is same and equal amount of the charge is on the outer surface. The capacity of this capacitor is C is equal to 4 pi epsilon naught AB upon B minus A हो जाता है बेटा. Either B is greater than to A. Next, suppose consider a cylindrical capacitor here better. For cylindrical capacitor, which is consisting of two cylindrical structures like this. Okay. Inner one has the radius is A, and outer one has a radius. Outer surface has the radius is B. Suppose some amount of the charge, when the positive charge given on the inner surface, what happening is equal amount of the opposite charge has to be introduced on the outer surface, right? Let's take its length is L. So the capacitance of the cylindrical capacitor C is equal to 2 pi epsilon naught L upon ln of B upon A हो जाता है बेटा. This is our cylindrical capacitor of the capacity. Next, suppose two plates or two square plates are arranged like this better. These are the two square plates. Okay. Each having the area A is equal to L square है. These two plates are separated by a certain distance D. One of the plate is making some angle theta with the direction of parallel. ठीक है. The mean distance क्या हो जाता है बेटा? D mean is equal to D plus L alpha by 2 हो जाता है बेटा. The capacitance of the capacitor C is equal to A epsilon naught upon D into 1 minus L alpha upon D हो जाता है बेटा. वो A को क्या लिखना पड़ता है? X पे लिखना पड़ता है. ठीक है.
It's a capacitance you have done. What is this capacitor? Next, suppose when the capacitors are connected in series combination like this, when n number of capacitors are connected in series combination, they have the different capacitances C1, C2, C1, C2, C3 and so on like that बेटा. The effect capacitance 1 by Cs is equal क्या हो जाता है बेटा? Sigma I is equal to 1 to n, 1 into Cn हो जाता है बेटा, where n is equal to, where I is equal to 1 to n हो जाता है. ठीक है. Next, in this case में what is the constant? Plus q minus q plus q minus q. चार्ज कांस्टेंट हो जाता है बेटा, पोटेंशियल इज डिफरेंस हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इन द सेम सिनेरियो, supposing the n number of capacitors are connected in parallel combination like this, n number of capacitors are connected and so on like this, n number of capacitors are connected in parallel combination, they have the capacitance C1, C2, C3 and so on Cn बेटा. ओके. the effect capacitance क्या हो जाता है बेटा इसके लिए? the effect capacitance Cp is equal to sigma I is equal to 1 to n. ठीक है. sigma I is equal to 1 to n into Ci हो जाता है बेटा. I changes I is equal to 1 to n value हो जाता है सर. ठीक है. इस effect capacitance है तो this capacitor. next देखो बेटा, suppose two capacitors are connected like this. दो capacitors ऐसे है. Suppose consider two capacitors are connected like this. This is one of the capacitor, which one positive is connected to positive, right? And negative is connected to negative. I said negative connect किया बेटा. So the energy stored in the capacitor is given by delta U is equal to half into C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 of 4 square बेटा. ऐसा हो जाता है. So in this, suppose when the terminals are changing in this case, this is one of the capacitor and this other one of the capacitor. These two terminals are changes, positive, negative हो गया, negative क्या हो गया बेटा, positive हो गया. So in this case, the loss of energy U is equal to half C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 plus V2 हो जाता है बेटा. V1 plus V2 का फोर्स कर हो जाता है. इसमें कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा? Vc is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 हो जाता है बेटा. इसमें C1 plus C2 हो जाता है. इसमें कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है? Vc is equal to C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2 हो जाता है. ठीक है. Suppose consider a capacitor which are having the two different plates है sir. Two plates है. This one of the plate and this other one of the plate. They are separated by a certain distance है बेटा. A certain distance separate किए. Each of one has a area here, cross section area. इसमें पॉजिटिव चार्ज दिए, ठीक है. इसमें नेगेटिव चार्ज दिए. क्या हो जाता है? तो दोनों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं. वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, वो इसको अट्रैक्ट करते हैं with certain amount of force. So the force between the capacitor plates is given by F is equal to Q square by 2A epsilon naught हो जाता है. ठीक है बेटा. This is the core concept of the capacitors. ठीक है. देखो बेटा. Next देखो बेटा. Two dielectrics of dielectric constants K1 and K2 are inserted between the capacitor plates. The effect capacity of this capacitor is C dash is equal to C by 2 into K1 plus K2 हो जाता है बेटा. इसका effect capacity हो जाता है. और C dash is equal to Kc हो जाता है बेटा. K by 2 sorry C by 2 into K1 plus K2 है. Cc gets cancelled out. Effect capacity, effect dielectric constant K is equal to K1 plus K2 by 2 हो जाता है. ठीक है. Suppose in the same scenario, two dielectrics of dielectric constants are fully filled between the capacitor plates K1 and K2 like this. Same area of the cross section will be same here better. So the effective dielectric constant क्या हो जाता है इसमें बोलो? K is equal to
2k1 k2 by k1 plus k2 हो जाता है। ठीक है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स are fully filled between the capacitor plates, then the effect dielectric constant K is equal to K1 K2 by K1 plus K2 हो जाता है। ठीक है, और देखो बेटा, सपोज कांस्टेंट कैपेसिटर ऐसा है, ठीक है, each of edge of the cross section है, these two plates are separated by a certain distance d beta, so between the three dielectric constants of K1 comma K2, वो K1 है बेटा, वो K2 है और K3 लगा दिया इसका, K1 comma K2 comma K3 लगा दिया। So what is the effective dielectric constant of this combination? बोलो बेटा क्या हो जाता है? K dash is equal to K1 K3 upon K1 plus K3 है बेटा, प्लस इसके लिए क्या हो जाता है बोलो, K2 K3 upon K2 plus K3 हो जाता है। ठीक है बेटा, the dielectric of dielectric constants of this effective system would be इसको this much हो जाता है। देखो बेटा, एक प्रॉब्लम दिया बेटा, based on the concept of the combination of the capacitors. A capacitor is made of a flat plate of an area A and the second plate having the stair structure as shown in the figure. Area of each staircase is A by 3 है बेटा and height dA. The capacitance of the arrangement is equal to कितने, वो निकालना पड़ता है। इधर से देखो बेटा वो कि this is nothing but which combination is there. देखो एक बैटरी लगा हुआ इधर ऐसा, वो पॉजिटिव हो जाता है, इसको नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो ऊपर का पूरा पॉजिटिव टर्मिनल में लाइक बिहेव्स करते हैं बेटा, नीचे कंप्लीट में नेगेटिव टर्मिनल में बिहेव्स करते हैं, और पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, वो पूरा क्या हो जाता है बेटा, वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। दिस इज नथिंग बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट हो गया बेटा इधर। ठीक है, वो a by 3 वो a by 3 और d है, इधर वो दूर क्या हो जाता है बेटा, d plus 3 2d हो जाता है, वो दूर क्या हो जाता है बेटा, वो 3 हो जाता है। ठीक है, इसमें तीन कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है, वो एक है, वो दो है, वो तीन है। सो द इफेक्ट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय 3d, वो A by 3 है, प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय 6d प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय 9d हो गया। ठीक है, C इक्वल क्या हो जाता है बेटा, टोटल 18d है, वो क्या हो जाता है 11A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है बेटा, 2024 में पूछ गया है प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बेटा और एक प्रॉब्लम ये है, a capacitor has air as a dielectric medium and two conducting plates area 12 centimeter square and are 0.6 centimeter apart. When a slab of dielectric having same area 12 centimeter square and 0.6 centimeters thickness is inserted between the plates, one of the conducting plate has to be moved 0.2 centimeters better to keep the capacitance the same as in the previous case, and the dielectric of constant glass rod would be equal to how much, epsilon naught this much given better. First क्या किया बेटा, इसका कैपेसिटर है बेटा, ओके, एयर में लगा दिया, area is equal to A level better, that is 12 centimeter square है, they are at what D is equal to 0.6 centimeter per है। नेक्स्ट क्या किया, ये डायलेक्ट्रिक लगा दिया बेटा, नेक्स्ट केस में डायलेक्ट्रिक लगा दिया, when a dielectric of dielectric constant has to be inserted, then क्या हो गया, the plates has to be changes from D to D plus T दूर पर चेंज हो गया बेटा। वो दोनों केसेस में कैपेसिटी सेम पूछे, दैट इज इक्वल टू C1 इज इक्वल C के C डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D is equal to A epsilon naught by T plus T by K,
दोनों भी सेम दिए बेटा, सो एप्सिलॉन गेस कैंसिल हो गया। बोलो 1/d इज क्या हो गया बेटा 1/t प्लस dy/k हो गया। ठीक है 1/d d कितना बेटा 1/0.6 इज इक्वल टू 1/0.2 प्लस 0.6 अपॉन k हो गया बेटा। और क्या हो गया देखो इधर 0.6 k इज इक्वल टू 0.2 k प्लस 0.6 हो गया बेटा। इधर लो 0.4 k इज इक्वल टू 0.6 हो गया बेटा और k इज इक्वल टू 6/4 हो गया। पॉइंट गेट्स कैंसिल हो गया इधर। ओके 3/2 हो गया दैट इज इक्वल टू 1.5। बहुत आसान फॉर्मूला है बेटा, पर प्रॉब्लम बड़ा दी है, सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। ठीक है लिखो देखो बेटा और एक प्रॉब्लम और 2024 में पूछे टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to a potential V है बेटा, other one is 2V है। वो एक कैपेसिटर है बेटा, ठीक है C है, इसका पोटेंशियल V दी है और एक कैपेसिटर दी है। बोलो इसका पोटेंशियल 2V दी है बेटा एंड कैपेसिटर से दी है। ठीक है नेक्स्ट the negative ends of the both are connected together. When the first ends are connected together, the decrease in energy of the combined system would be equal how much? नेक्स्ट क्या है बेटा एक कैपेसिटर इधर कनेक्ट किए और एक कैपेसिटर ऐसा कनेक्ट किए, इसको पॉजिटिव कनेक्ट किया बेटा, नेगेटिव कनेक्ट किया ऐसा। ठीक है also joined together the decrease in energy of the combined system। इसमें कितने एनर्जी डिक्रीज हो गए वो निकालना पड़ता है बेटा। फर्स्ट इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, ui इसमें क्या हो जाता है बेटा ऑफ cv² प्लस ऑफ c इंटू 2v² हो गया ना। ठीक है दैट इज ui इसमें क्या हो गया बेटा ऑफ cv² प्लस ऑफ c इंटू 4v² हो गया बेटा। दिस is initial energy। next when they are connected, positive is connected to positive and negative is connected to negative कनेक्ट किए बेटा। इसका पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल 2V है। इसको सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है, द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आउटवर्ड Vc इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है बेटा। C1V1 मींस क्या हो जाता है बेटा बोलो CVA प्लस C2V2 मींस C2V2 2CV अपॉन C1 प्लस C2 मींस क्या हो जाता है बेटा C1 प्लस C2 है दैट इज इक्वल टू 2C है बेटा, दैट इज इक्वल टू 2C। ठीक है दैट इज Vc इज इक्वल क्या होगा बेटा 3/2 इंटू V हो गया 3/2 इंटू V, इसका कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है so in this case the energy of this system is given by UF is equal to off into CV common square, V common square means क्या बेटा 3/2 into V of whole square हो गया। ठीक है the loss of energy is equal क्या हो जाता है बोलो, what is the loss of energy, delta U is equal to UI minus UF हो जाता है बेटा। UI is equal क्या ऑफ CV² प्लस वो क्या हो गया बोलो 2 1 2 2 दैट इज फॉर CV² माइनस UF इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा C/2 इंटू 3/2 इंटू V ऑफ होल स्क्वायर हो गया। दिस इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बेटा, दिस इज इक्वल टू CV²/4 दैट इज इक्वल टू CV² अपॉन 4 हो जाता है। ठीक है लिखो बेटा। ओके देखो बेटा और एक प्रॉब्लम 2024 में पूछे टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to the potential V and other one is a 2V better। These are one of the capacitor here better capacitance C and which has a potential V। This is our capacitor here better
It is also has the same capacitance but potential 2V है बेटा. नेक्स्ट क्या किए और दोनों कैपेसिटर्स का वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द सेकंड वन एंड वन इज नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द सेकंड वन. ठीक है, ऐसे कनेक्ट किया बेटा. सो व्हाट इज द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम वो निकालना पड़ता है. पहले इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करो बेटा. Uy इज इक्वल टू ऑफ सी वी स्क्वायर है प्लस ऑफ सी इंटू 2v स्क्वायर है. इसका इनिशियल एनर्जी है. नेक्स्ट आफ्टर कनेक्टिंग फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द दोस टू कैपेसिटर्स क्या हो गया देखो बेटा. वो 2v है, वो c है, v है. फाइनल एनर्जी क्या होगी. uf इज इक्वल टू ऑफ c इक्वल इनटू कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ता है फर्स्ट. व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल. vc इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया बेटा. C1 V1 मीन्स क्या हो गया देखो बेटा. CV है प्लस 2 CV अपॉन 2C हो गया बेटा. दैट इज इक्वल टू 3/2 V हो गया. सो फाइनल एनर्जी क्या हो गया बेटा. VF इज इक्वल टू ऑफ C इक्वलेंट मीन्स C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 2C into V कॉमन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/2 into V of whole square हो गया. इसका UF फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बेटा. द लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू UY माइनस UF हो जाता है बेटा. UY इज इक्वल क्या. व्हाट इज द UY ऑफ CV स्क्वायर प्लस ऑफ C into 4V स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा. UF ऑफ 2c into 3/2 v of whole square हो गया. इसका वैल्यू क्या होगा बेटा. cv स्क्वायर बाय 4. दिस इज आवर फाइनल आंसर बेटा. प्रॉब्लम भी छोटा है, बट करने के काम भी छोटे हैं. प्रॉब्लम भी बड़ा पूछिए. वो 2024 में पूछिए बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम है. ठीक है, ओके. देखो बेटा, वो 2023 में पूछे, बहुत आसान प्रॉब्लम है. The equivalent capacitance of the combination is equal to how much. देखो कैसा निकालना पड़ता है. वो बैटरी कनेक्ट करो. ठीक है, बैटरी कनेक्ट करो और प्लस है 0 वोल्टेज पे रहता है बेटा. वो भी 0 है, वो भी 0 है, 0 है, 0 हो जाता है, वो भी 0 हो जाता है, वो 0 हो जाता है. वो प्लस वोल्टेज हो जाता है बेटा. वो प्लस है, वो प्लस वोल्टेज हो जाता है. ओके. और दोनों कैपेसिटर प्लेट्स आर एट द सेम पोटेंशियल. वो कैपेसिटर में एक्टिव ही नहीं हो जाते. ठीक है. So what is equivalent capacitance? वो दोनों भी पैरेलल पर है. दैट इज C इक्विवेलेंट इज क्या होगा बेटा. C इक्विवेलेंट इज C प्लस C है, दैट इज 2C हो गया. ठीक है. कितना आसान है प्रॉब्लम. बहुत आसान है नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है. वो बैटरी कनेक्ट करते तो हमारा काम बहुत कम हो जाता है. ठीक है बेटा. देखो बेटा, और एक प्रॉब्लम 2024 में पूछे हैं. 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 25 microfarad, 30 microfarad and 45 microfarad are connected parallel to 100 volts of energy is stored in the above combination is easy beta. When these capacitors are connected in series to the same supply, the energy is equal to 9/x into E हो गया बेटा. The value of x निकालना पड़ता है. फर्स्ट कैसे कनेक्ट किया बेटा. फर्स्ट पैरेलल में कनेक्ट किए. Therefore इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी क्या हो जाता है बेटा. UY इज इक्वल टू ऑफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर है बेटा. ठीक है. UY इज इक्वल टू ऑफ C इक्विवेलेंट मींस C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू V स्क्वायर हो जाता है. ठीक है. V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा बेटा. 25 प्लस 45 प्लस 30 100 माइक्रोफैराड है. UY इज इक्वल टू ऑफ इनटू 100 माइक्रोफैराड into V स्क्वायर मींस 100 स्क्वायर हो गया. ठीक है. लेट्स टेक दिस इक्वेशन नंबर 1. वो ई ले हो गया. वो ई दिए प्रॉब्लम में, ई दिए ऐसे ही दिए. UI इज इक्वल टू E. नेक्स्ट क्या किए. these capacitors are connected in series combination में कनेक्ट किए बेटा. सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी क्या हो गया. E सीरीज इज इक्वल टू क्या हो गया.
9 by E इंटू एक्स हो गया बेटा, वो निकालना पड़ता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में E इज इक्वल टू E सीरीज इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, ऑफ इंटू सी इक्वलेंट इंटू बी स्क्वायर हो जाता है। दैट इज इक्वल E सीरीज में क्या हो जाता है बेटा, ऑफ इंटू सी इक्वलेंट मीन्स 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 इंटू बी स्क्वायर हो जाता है ना बेटा, ठीक है। दैट इज इक्वल E सीरीज में क्या हो जाता है देखो, ऑफ इंटू 1 by 25 प्लस 1 by 30 प्लस 1 by 45 इंटू 100 स्क्वायर है बेटा, ठीक है। बट इसका एनर्जी क्या दिया है, ई दिए, दिस इज इक्वल क्या दिया बेटा, ई दिए, दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स इंटू ई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो गया 9 ई अपॉन ये 6 हो गया बेटा, ओके। 9 कैंसिल करो, इसमें एक्स इज को क्या बन गया, एक्स इज को 86 मिल गया, सीधा सीधा बात है, ठीक है। देखो बेटा और एक प्रॉब्लम देखो बेटा 2024 में पूछे, बहुत आसान प्रॉब्लम पूछे इधर। A capacitor with a capacitance C, potential V has energy. It is connected to another capacitor with capacitance is 2C and potential 2V. Then the loss of energy is equal to कितने हो जाते हैं? What is the loss of energy बेटा? Delta U is equal to of C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square है ना। लॉस ऑफ एनर्जी मींस कैसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया कैपेसिटर्स, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट किया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कनेक्ट किया, वो केस में एनर्जी लॉस हो जाता है बेटा इधर। इसका कैपेसिटेंस क्या है बेटा, वो सी है, वो 2C है, वो V है, वो 2V है, ठीक है। सो इनिशियल एनर्जी U इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, U is equal to ऑफ C स्क्वायर हो जाता है बिफोर कनेक्टिंग दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल, ठीक है। दैट इज डेल्टा U इज इक्वल क्या हो देखो, ऑफ इनटू C1 इनटू C2, C1 मींस कितने दिए बेटा, C इनटू 2C अपॉन 3C इनटू V minus 2V ऑफ होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू ऑफ इनटू 2/3 इंटू C हो गया, वो V स्क्वायर हो गया। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, डेल्टा U इज इक्वल टू 2/3 इंटू ऑफ C स्क्वायर है बेटा, इसका वैल्यू दिए, दैट इज इक्वल 2/3 इंटू कितने दिए बेटा, E दिए, E। दिस इज कंपेयर विद x अपॉन 3 इंटू E है बेटा, इससे x इज इक्वल टू 2 मिलेंगे, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, 2024 में पूछे बेटा, वो कैपेसिटर्स में कम से कम ये क्वेश्चन पूछते बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचने के वो प्रॉब्लम करना पड़ता है। 4 मार्क्स जेब में लाओ, चलो आके चलो, ठीक है। फिक्र मत करो, कॉन्फिडेंस में ऑल फॉर्मुलास एक बार रिवाइज करो, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस, ठीक है बेटा। लिखो।